Hey, so occasionally had a sell in system trade below 11 o'clock. Couldn't really capture everything, but exited around 730 levels. What did I do in BankNifty? Nothing. Again, no volumes. The last volume reference in Nifty was like way back. So what I want Nifty to do is basically break yesterday's low, which is 597, and then see what is happening, if it's a up structure or down. Because I don't really like this structure in 3 minutes. So let's see. What will I no plans again for tomorrow. Same goes in Bank Nifty. What did I do in system trade? I gave a Bank Nifty system trade today. Trade did work kind of, but did not trigger because I wanted 130 to be above VWAP around 800 levels, and then it was a sell below 130. Sell below 130 happened. I also mentioned it will be a scalp sell, but I didn't really want this to be here, so did not trigger, did not take. थैंक यू. निफ्टी में सुबह शॉर्ट किया था. सिस्टम ट्रेड शेयर नहीं करता मैं यूजली सुबह के ट्रेड्स. 11 o'clock के नीचे पूरा नहीं कैप्चर कर पाया. 730 के आसपास निकल गया था और लो था 707. बैंक निफ्टी में कुछ नहीं किया. निफ्टी में जो वॉल्यूम्स हैं, जो अच्छे स्ट्रक्चर्ड वॉल्यूम्स आए 3 मिनट के, काफ़ी दिन हो गया है वो उसको आके, तो देखते हैं क्या होता है. अब मैं चाहता हूँ ये टूटे 597, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा क्या करना है, बाय करना है, सेल करना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर मुझे सही नहीं लग रहा एटलीस्ट अप मूव के लिए. पर स्मार्ट मनी को जो करना है वो करेगा ही. मेरे अच्छे लगने या नहीं लगने से कुछ नहीं होता. अभी सिस्टम ट्रेड जो मैंने दिया था वो बेसिकली ट्रिगर नहीं हुआ, पर स्कैल्प सेल था 130 के बाद. बेसिकली था 130 ऊपर चाहिए था मुझे VWAP 800 के आसपास, और उसके नीचे सेल था, स्कैल्प सेल था. निफ्टी में कल भी कोई प्लान नहीं है, जैसे आज नहीं था. देखते हैं क्या होता है. थैंक यू.